Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my online video lectures. Dear students, as you know, we are providing the classes on plant physiology and simultaneously we are discussing reproductive biology as well. My dear students, as you know, in a reproductive biology, we discussed structure of flower, which is an organ of sexual reproduction, and we also discussed the development and structure of this anther, or it is one compartment called as pollen sac. Pollen sac is that structure within this anther which is regarded as storehouse of formation of the pollen grains. Dear students, you discussed that an anther consists of 4 pollen sacs and you claimed that it is tetrasporangiate calcium. You also discussed that an angiosperm consists of this anther where there are 2 lobes connected by connective. And in the previous lecture, you discussed the anther wall layers. You discussed the outermost layer starting from this epidermis up to the middle layers. And all these layers protect this sporogenous tissue and they play their own role. Please, my dear students, first of all, you focus on this diagram. While there is a clear-cut structure given on this pollen sac, you observe the innermost layer of this pollen sac where there are fertile cells called as sporogenous cells. In the coming lectures, we will be dictating the sporogenous cells, which are diploid cells called as pollen mother cells. They will be responsible, they will be precursors for the pollen grains. And pollen grains are those structures, also called as microspores and male gametophyte, which are responsible to protect and hide the male gametes. And please remember, it is this sporogenous cells which is being protected by the tapetum. Today it is our discussion. That is being protected by, that is being covered by the middle layers, which in turn is protected and covered by the endothelial layer, and that is being protected by the epidermis. बेटा अगर आपको previous lecture याद होगा, we discussed the outermost layer of this pollen sac, outer anther wall called as epidermis. You said that the main role played by this outer wall, this epidermis, is to protect. That means it is protection. In Archithobium, it develops the fibrous thickenings, and remember, just like endothelium, it can play its own behavior. Second layer, important layer for this pollen sac, you discussed that was called as endothelium. बेटा आपने देख लिया, यही एंडोथीसियम फाइब्रस लेयर होता है, जिसकी वजह से यहां से जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, ये कट होता है, लाइन ऑफ डिस्टेंस कट होती है और पोलन ग्रेन्स इसी से बाहर निकलते हैं, डिस्पर्स होते हैं. सो दैट मींस एंडोथीसियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन. इसके बाद यू डिस्कस्ड द रोल प्लेड बाय द मिडिल लेयर्स. दे कुड बी 1, 2 or 3 layers. You said that these are storage house of the starch. When they get crushed, the material gets transported to the sporogenous tissue. कहने की बात यह है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हो रहा है. बच्चे याद रखना है, एक्चुअली यहां पे माइक्रोस्पोर्स बनने चाहिए, यहां पे डेकोरेटिव पोलन ग्रेन्स बनने चाहिए, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनने चाहिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए. इसलिए जो गेम हो रही ना, ये सब गेम हो रही है पोलन ग्रेन को बनाने के लिए.
सो दैट मीन्स इसका भी अपना काम था, इसका भी अपना काम था, और मिडिल ईयर्स का भी अपना काम था नरिशमेंट देना. बट टुडे, starting our topic, I will be discussing the innermost layer of this anther wall. You will call this layer as tapetum. First point, I will say that tapetum is regarded as innermost wall of microsporangium or innermost wall of anthers. So anther walls में जो innermost wall होता है, वो innermost wall जो होता है, that is tapetum. anther wall में 4 layers आते हैं, एक epidermis, endothecium, middle layers और tapetum. But please remember that tapetum is innermost wall of this pollen sac. It is regarded as innermost anther wall. इसके बाद, it's also called as, these layers are also called as microsporangial wall. इसके बाद, sir, in endosperms, when we scan this anther, when we scan this pollen sac under microscope, we observe that this tapetum is single layered. दूसरी बात है, that means ये एक ही लेयर होता है, it's not bilayered, it is not tri-layered like middle layers, एक ही लेयर होता है. Then you have to remember, sir, tapetal cells, its layer is regarded as physiologically one of the vital layer and one of the important layer. Physiologically मैं इसे कहूं, ये सबसे important layer है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस tapetum में है रिगार्डिंग दिस पोलन सैक. वी विल शो, जो ये बनाता है वो कोई और लेयर नहीं बना सकता है, ये नहीं तो पोलन ग्रेन्स नहीं. Hence you have to say that physiologically this layer is regarded as important layer. आप कहेंगे सर फिजियोलॉजिकली इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? बच्चे याद रखना है, ये वो लेयर है जो डायरेक्टली टच करता है फर्टाइल लेयर को, जो डायरेक्टली टच करता है फर्टाइल सेल्स को, जो डायरेक्टली टच करता है, कांटेक्ट में है पोलन ग्रेन्स के साथ. इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द सुपोरोजिनस सेल्स. और अगर यहां से कोई मटेरियल आता है, वो उस मटेरियल को सबसे पहले टैपेटम से पास होना चाहिए. इसीलिए ये एक पैसेज है बिटवीन द पोलन ग्रेन्स and all the anther walls here. Hence you must claim, as a student of reproductive biology here, you must claim that it is physiologically one of the vital layer, one of the important layers. जरा बेटा आपने क्या याद रखा है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? टैपेटम. सर टैपेटम क्या है? इनरमोस्ट वॉल ऑफ पोलन सैक, सबसे निचले वाला जो लेयर है, जो डायरेक्टली टच करता है सुपोरोजिनस सेल्स को, वो एक्चुअली है टैपेटम. सर टैपेटम जो है ये बाइलेयर? नो, इट इज सिंगल लेयर. और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखा है, इट इज रिगार्डेड एज फिजियोलॉजिकली एज इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ दिस एंथर वॉल. व्हाई? यू हैव टू रिमेंबर दैट इट हैज डायरेक्ट कंटैक्ट विद द फर्टाइल सेल्स, इट हैज डायरेक्ट कंटैक्ट विद द सुपोरोजिनस सेल्स. एक दूसरी बात है, जब भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम अदर लेयर्स टुवर्ड्स दिस फर्टाइल सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले मटेरियल को पास होना है टैपेटम से, इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. नाउ आफ्टर दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस. इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस टैपेटम. सर व्हाट इज दैट? यू हैव टू से दैट दिस टैपेटल लेयर, its cells are active plus its cells are expressive. बेटा याद रखना है, इसकी सेल्स सबसे पहले एक्टिव है, दैट मींस ये काम करते हैं, मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव, इनके पास एंजाइम्स है, ये एक्टिव है, ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. याद रखना है, द सेल्स ऑफ दिस टैपेटम आर एक्टिव एंड दे आर एक्सप्रेसिव. बेटा याद रखना है, वर्ड एक्सप्रेशन इज इन जेनेटिक्स. जो सेल ज्यादा एक्सप्रेसिव होगी, इसका मतलब है डीएनए से एमआरएनए बनता है. जब एमआरएनए बनता है तो ट्रांसलेशन होती है, जब ट्रांसलेशन होती है तो राइबोसोम्स पे तो प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, रिएक्शंस होती हैं. So you must say that the cells of the tapetum are active and expressive. Hence, you have to say that these cells
are metabolically advanced, these are metabolically active. ये एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इनके काम ज्यादा है. They're doing number of functions for the benefit of what is called as the sporogenous tissue. Hence, you have to claim that these cells are active and these cells are expressive. इसके साथ बेटा और एक पॉइंट याद रखना है. अगर ये सेल्स एक्टिव है, जेनेटिकली दे आर एक्सप्रेसिव, मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव. बेटा याद रखना है, इनके दो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं जो बाकी सेल्स के अंदर हमने नहीं देखे हैं रिगार्डिंग दिस पोलन सैक. बेटा पहला पॉइंट, इफ दे हैव टू रिमेन एक्टिव, अगर इन्हें ज्यादा प्रोटीन्स बनाने हैं, अगर इन्हें ज्यादा एंजाइम्स बनाने हैं, देन they have to do one important what is called as the adaptation. First, they are showing multi-nucleate condition. They are showing multi-nucleate condition, and it has been observed that these tapetal cells could be polyploid. I will say, what do you mean by polyploids? What do you mean by multi-nucleate condition? आपके लिए क्वेश्चन है. बट आप मुझे बताइए, सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक ही न्यूक्लियस होता है, वन न्यूक्लियस पर सेल. अगर एक के बजाय अब दो न्यूक्लिय आएंगे, दो के बजाय अब चार न्यूक्लिय आएंगे, जाहिर सी बात है जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज होगा, एक्सप्रेशन ज्यादा होगी. ये मेटाबॉलिकली एक्टिव जो सेल्स है, टैपेटल सेल्स है, इनका यही क्राइटेरियन है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहां पे बनते हैं. सो दैट मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियर आर फॉर्मड पर सेल. इसीलिए इनके पास ज्यादा डीएनए कंटेंट होता है, इसीलिए इनके पास एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसीलिए मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव एंड रिमेंबर दे आर एक्सप्रेसिव. सो बेटा याद रखना है, इनके पास मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है. और दूसरी बात है, दे कैन बी पॉलीप्लॉइड. आपके लिए और एक क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर पोलाइटी? व्हाट इज द पोलाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट इज द पोलाइटी ऑफ होमो सैपियंस? व्हाट इज द पोलाइटी ऑफ मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स? यूजुअली वी आर डिप्लॉइड. I mean maximum. Human beings are diploid with 2n is equal to 46. बेटा याद रखना है, अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही कंप्लीमेंट है, एक ही सेट है जेनेटिक मटेरियल का, तो हैप्लॉइड है. अगर दो सेट्स है तो डिप्लॉइड है. अगर चार सेट्स है तो टेट्राप्लॉइड है. अगर पांच सेट्स है, पेंटा है, हेक्सा है, सेप्टा है, ऑक्टा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन याद रखना है, जिसमें ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है, डिप्लॉइड के आगे तीन सेट्स, चार सेट्स, वी हैव टू से सच सेल्स विच आर हैविंग genetic complement more than the diploid here, we say that they are polyploids. और एक पॉइंट आपके लिए मैं बता दूं, आजकल पॉलीप्लॉइड्स फ्रूट्स भी बनाए जाते हैं. नेचुरली तो कुछ प्लांट्स पॉलीप्लॉइड है ही. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज वीट. Wheat is hexaploid. Triticum evestimum botanically called as belonging to Poaceae family here, grass family here. और एक पॉइंट याद रखना है, वीट पे, वीट का जो एंट्रांस वाले हैं वो बच्चे याद रखे, जो वीट होता है, जो मेज होता है, जो राइस होता है, इसका जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है. अपने टॉपिक पे आएंगे. सर, जो ये सेल्स है, इन सेल्स में एक क्राइटेरिया है दैट द सेल्स आर पॉलीप्लॉइड इन नेचर. सो दैट मीन्स दीज आर नॉट डिप्लॉइड लाइक रेस्ट सेल्स हियर, लाइक रेस्ट प्लांट हियर. इनमें पॉलीप्लॉइड इसलिए हुई है, ज्यादा जेनेटिक मटेरियल. एक्चुअली मुझे एक पॉइंट बताना था, आजकल फ्रूट्स डिलिबरेटली बनाए जाते हैं बाय ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, वो पॉलीप्लॉइड बने. जब पॉलीप्लॉइड बने, इनमें गीगास इफेक्ट बनता है, इनकी सेल्स बड़ी हो जाती है, फ्रूट साइज बड़ा होता है, तो कमर्शियल वैल्यू इनका ज्यादा होता है. This is called as gigas effect. Now coming to the point, I am explaining tapetum, why the cells are active, why the cells are expressive, metabolically they are active, why they are so much active here, why there is so much metabolism and catabolism. The fact is clear in the genetic world here that the cells are multinucleate, that the cells are polyploid. जरा बेटा आपने क्या याद रखा है? We are explaining the tapetal layer. Tapetal layer is directly covering the sporogenous layer. Please remember, beta,
टैपेटम जो होता है ये सिंगल लेयर होता है, इट इज फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेयर, क्योंकि मटेरियल को अगर पास होना है वो इसी से पास होता है। और दूसरी बात, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है सुपोरोजिनस लेयर से। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, जेनेटिकली दे शो द कंडीशन दैट इज मल्टीन्यूक्लिएट एंड दे कैन बी पॉलीपोलाइड एज वेल। इसके बाद नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर टैपेटम को एंजियोस्पर्म में हम डिटेल के साथ पढ़ें, this lecture is really important for the students of class 12, for the students of the NEET and other such exams, and those students who are undergraduate students within the colleges. If they want to learn the reproductive biology, they must remember the role played by this tapetum in case of those angiosperms. बेटा याद रखना है, on the basis of behavior, tapetal cells, tapetal layer is of two types. On the behavior of the tapetal cells का कैसा behavior है, इस हिसाब से tapetal layers के दो टाइप्स हमने एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टडी किए हैं बेटा, हम एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला टैपेटल लेयर हमने एंजियोस्पर्म्स में देखा, लाइक लिली में हमने देखा, दिस टैपेटल लेयर इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। दिस टैपेटल टाइप इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मोडियल टाइप, और if you forget this term, you must say it is called as invasive type, or this is called as amoeboid type. This is amoeboid type. So it is periplasmodial type, the first type of what is called as this tapetal layer. दो टाइप्स है, लेकिन क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे, सेल्स का बिहेवियर कैसा है, सेल्स कैसे बिहेव करते हैं। इस रिप्रोडक्टिव सीजन में हमने दो किस्म के टैपेटल लेयर्स को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है। सबसे पहला लेयर जो है, सबसे पहला टाइप जो है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। सर व्हाट इज दिस टाइप ऑफ दिस पेरिप्लाज्मोडियल, बेटा याद रखना है, इट इज दैट टाइप ऑफ टैपेटम in which cells degenerate early. सेल्स सबसे पहले ही यहां पे डिजेनरेट होते हैं, सबसे पहले ही खत्म होते हैं, रिलीजिंग प्रोटोप्लाज्म टुवर्ड्स सुपोरोजीनस टिश्यू। मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये वाला लेयर, ये वाला इस वक्त पेरिप्लाज्मोडियल टाइप है, बेटा समझ लीजिएगा इसमें कौन सा बिहेवियर, कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर ये पेरिप्लाज्मोडियल टाइप ऑफ टैपेटम इस वक्त है, तो इसमें रूल एक याद रखना है, जब अंदर जाके सुपोरोजीनस सेल्स बनते हैं, जब ये फर्टाइल लेयर अंदर जाके तैयार होता है, अब इसके बाद देखना है, इस वाले लेयर के जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स यहां पे डिजेनरेट होती है, इसका मतलब है इनकी डेथ होती है। अगर इनकी बेटा डेथ हुई है, जाहिर सी बात है, जो इनके अंदर मटेरियल था, जो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म था, कॉमन सेंस है ना, ये मटेरियल, ये पेरिप्लाज्मोडियम सब कुछ इस सुपोरोजीनस टिश्यू के अंदर आएगा। जरा आपने क्या लिखा है, इट इज दैट टाइप इन विच सेल्स डिजेनरेट अर्ली, पहले ही डिजेनरेट होते हैं। जब ये डिजेनरेट होते हैं तो ये अपना प्रोटोप्लाज्म रिलीज करते हैं, लेकिन जब रिलीज करते हैं, किसकी तरफ रिलीज करते हैं, सुपोरोजीनस टिश्यू की तरफ रिलीज करते हैं। बेटा आपके लिए और एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, अगर इन्हें मटेरियल रिलीज करना है, अगर इन्हें मटेरियल इसकी तरफ छोड़ देना है, कैन यू टेल मी, इन्हें आउटर टेंजेंशियल वॉल को रिलीज करना है, ब्रेक करना है कि इनर? इन्हें ब्रेक करना है इनर टेंजेंशियल वॉल को। बच्चे याद रखिए, ये बाकी लेयर्स है, दिस इज माय आर्म, कंसिडर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। मेरे हाथ में जो डस्टर है,
इट इज टैपिटल सेल। और टैपिटल सेल के इस साइड में जहां पे मैं दिखा रहा हूं, दिस इज सुपोरोजीनस सेल्स। बेटा याद रखना है, ये वाला लेयर जो इसकी तरफ टच कर रहा है ना, प्लीज रिमेंबर, ये आउटर टेंजेंशियल वॉल है। अगर ये इस मटेरियल को यहां आना है, इसका मतलब है इनर टेंजेंशियल वॉल को ब्रेक होना है। इसीलिए आपने याद रखना है, यहां पे जो सेल्स होते हैं, इनके इनर टेंजेंशियल वॉल्स प्लस साइड वॉल, आई मीन रेडियल वॉल्स, इनके साइड वॉल्स ब्रेक होते हैं। बेटा जब ब्रेक होते हैं तभी जाके प्रोटोप्लाज्म यहां से रिलीज होता है। प्रोटोप्लाज्म इज इजेक्टेड और यही प्रोटोप्लाज्म कल जाके इसकी तरफ आता है और इसकी तरफ आता है। बेटा आपने याद क्या रखा है? पहला टाइप, व्हाट इज दैट? पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। यहां इन्वेजन होता है, यहां पेरिप्लाज्मोडियम, यहां ये वाला टैपेटम, इसके सेल्स जब दिख रहा है जैसे अटैक कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कहते हैं इन्वेजिव टाइप। और जो मटेरियल ये रिलीज करेंगे, we will call it as the पेरिप्लाज्मोडियम। इस टाइप को हम कहते हैं पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? अर्लियर स्टेज में इसके जो इनर वॉल्स है, इसके जो रेडियल वॉल्स है, वो ब्रेक होते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तभी जाके ये अपना मटेरियल छोड़ देता है। जब ये मटेरियल छोड़ देता है, वो किसकी तरफ आ रहा है? वो सुपोरोजीनस टिश्यू की तरफ आ रहा है, इंशाल्लाह। Unfortunately, we have to make these short videos. Understand? You can know the condition, what reason, why I will be making these short videos. Inshallah, in the next lecture, I will be explaining the role played by this periplasmodial type. Okay, thank you.